Yeah, hello everyone, welcome back to the channel. So in today's video, we are diving into one of the most exciting, controversial and rapidly growing fields of modern science, which is biohacking and DIY biology. So from lifestyle optimization to genetic editing at home, biohacking has expanded far, beyond niche hobbyists. So it's now a global movement challenging the boundaries between human biology, technology and personal experimentation. Before proceeding towards the video, I just want to request to please like, comment, share and subscribe to my channel. So let's understand what is biohacking and DIY biology. So what is exactly is biohacking? So in simple terms, I would say it refers to any attempt to improve or modify the human body physically, mentally or genetically using science, technology or lifestyle changes. Okay. बायोहैकिंग हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम ह्यूमन बॉडी को किसी तरीके से एनहांस कर सकें, इम्प्रूव कर सकें फिजिकली, मेंटली एंड जेनेटिकली यूजिंग साइंस, टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल चेंजेस. ओके. DIY बायोलॉजी मूवमेंट जो है, जिसे हम DIY बायो भी बोलते हैं, ये कम्युनिटी ड्रिवन सब ग्रुप है ऑफ बायोहैकिंग, जिसमें इंडिविजुअल्स वर्क्स ऑन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स आउटसाइड ट्रेडिशनल लैब्स. एंड ये जो मूवमेंट है, it is aiming to democratize science, making biology accessible to everyone, not just professionals. Okay. Now, biohacking की जो history है, did not appear overnight. Obviously, its roots go back to basic self improvement practices, जो कि specialized diets हैं, meditation हुआ, performance enhancement हुआ. ये सब चीज़ों से biohacking का जो origin है वो start हुआ. Modern biohacking movement took off in the early 2000s, जहाँ पर biotechnology equipment affordable हो गया, open source tools आ गए, available हो गए in developed and developing regions. Community biology spaces खुल गई, accessible lab equipment हो गया and online tutorials आ गए, जिसकी वजह से DIY experimentation जो है वो आगे बढ़ पाया. बायोहैकिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. दे फॉल इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज. फर्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशनल बायोहैकिंग. लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशनल बायोहैकिंग में डाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, स्लीप ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी किस तरीके से एनहांस की जा सकती है, डेली हैबिट्स को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, how all of it can be organized in a manner कि ये ह्यूमन बॉडी को बेनिफिट करे, ह्यूमन साइंस को बेनिफिट करे. देन सेकेंड टाइप इज टेक बेस्ड बायोहैकिंग, जिसमें वेयरेबल, इम्प्लांट, सेंसर्स, डिवाइसेस, इसको यूज करके हम कैसे ह्यूमन बॉडी का जो डेली हैबिट्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, बॉडीली फंक्शंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट इज टेक बेस्ड बायोहैकिंग. DIY बायोलॉजी एंड जेनेटिक बायोहैकिंग होता है जहां पर हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके ऑर्गेनिजम्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन बिल्ड बायोटेक डिवाइसेस outside of official boundaries, outside of traditional labs. That is DIY biology. Now each type appeals to different communities and goals. ठीक है. DIY biology जो है, it represents the citizen science of biohacking, जहाँ पर hobbyists, students, independent researchers ये अपने experiments conduct कर सकते हैं community labs में, जहाँ पे basic traditional tools होते हैं, जैसे कि microscopes हुए, PCR machines हुई, incubators हुए, और भी बहुत सारे tools वहाँ पे available रहते हैं. Now the goal is not to replace professional science but to open it. Biology should be open to everyone. Biology, a hands-on learning experience accessible to anyone curious enough to try. It should be open to everyone. It should be accessible for everyone. It should not be limited to certain courses or certain certificates. It should not. So this democratization of science empowers ordinary people to innovate, to collaborate and to contribute to real world biological discoveries. Now, next is popular biohacking techniques. Now, there are some of the techniques which are popular in biohacking. Some of the techniques are nootropics. Nootropics मतलब होता है ऐसे supplements जिससे हम
मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें, फोकस इम्प्रूव कर सकें, कॉग्निटिव फंक्शन इम्प्रूव कर सकें ह्यूमन का, उस टेक्निक को हम, उन सारे टेक्निक्स को हम नूट्रॉपिक्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है जहां पर हम मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सकें, उसके फंक्शंस को एनहांस कर सकें, लॉन्जेविटी इम्प्रूव कर सकें ह्यूमन बॉडी की, वेट कंट्रोल इम्प्रूव कर सकें, that all of that techniques or all of that methods comes into intermittent fasting. Sleep optimization की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम sleep trackers यूज करके, blue light blockers यूज करके, controlled routines यूज करके sleep optimize की जा सकती है. Then there is cold therapy and heat exposure जहां पर resilience boost कर सकते हैं, inflammation को reduce किया जा सकता है. माइक्रो डोजिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बट प्रैक्टिस बाय सम टू एक्सप्लोर कॉग्निटिव इफेक्ट्स. So these methods focus on optimizing the mind and body for better performance. Now, wearable and implantable devices क्या होते हैं? Wearable and implantable devices क्या होते हैं? So see, tech-based biohackers जो होते हैं वो wearables को use करते हैं और implants को use करते हैं to monitor and enhance their physical systems, right? Wearables जैसे कि fitness trackers हो गए, glucose monitor हो गए, ECG patches हो गए, sleep tracking devices हो गए, hearing aids हो गए, जिनको wear करके, जिनको हम use करके हमारा daily functions को improve कर सकते हैं, that devices are clubbed into wearable devices. Implantable biohacking बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है जहाँ पर RFID, NFC चिप्स को इम्प्लांट किया जाता है अंडर द स्किन, जिसकी वजह से डिजिटल डेटा स्टोर किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है. पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज वेयर बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी ट्रूली मर्ज. ठीक है. जेनेटिक बायोहैकिंग की अगर मैं बात करूं तो दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड टेक्निकली डिमांडिंग फॉर्म ऑफ बायोहैकिंग, बिकॉज जेनेटिक बायोहैकर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के साथ. दे परफॉर्म जीन एडिटिंग इन बैक्टीरिया और ईस्ट, एक्सप्लोर सिंथेटिक बायोलॉजी प्रोजेक्ट्स एंड मेनी मोर. सो DIY जेनेटिक इंजीनियरिंग किट्स जो हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं फॉर एजुकेशनल पर्पजेज. प्रोफेशनल जीन थेरेपी को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगती है, बट DIY बायोहैकर्स जो हैं दे focus on only harmless organisms to learn the science behind biological system. They do not work on rare microorganisms or new kind of microorganisms or anything which can be harmful or which requires strict regulation or strict monitoring. So DIY biohackers को वो सब चीज़ें accessible definitely नहीं है, but हाँ general basic चीज़ें available होती है. सेफ्टी कंसर्न्स की अगर बात की जाए तो डिस्पाइट इट्स एक्साइटमेंट एंड पोटेंशियल, बायोहैकिंग डेफिनेटली कम्स विद रियल सेफ्टी कंसर्न्स. Unregulated supplement use should be looked at. Unsafe genetic or bacterial experiments must be monitored. Implant related infections must be checked. Misinterpretation of scientific data must be looked, and lack of medical supervision. ठीक है, it should be clearly checked. So without proper knowledge, even simple experiments can pose risks, right? It can possess risk. So इसीलिए monitoring बहुत ज़रूरी है. Experts जो हैं वो they emphasize education, awareness and safety guidelines in community labs. Now, what are the ethical issues? So biohacking raises critical ethical issues जब हम बात करें. Should anyone be allowed to conduct genetic modifications at home? Because we are talking about genetic modifications, which is even if they are working with harmless organisms, but अगर कुछ इस तरीके से वो mutation हो जाए या कुछ भी, because see, science has endless possibilities. Science can never be limited to up to certain possibilities or certain results. So should anyone be allowed to do that? Could DIY techniques accidentally create harmful organisms? Is there the possibility? Yes, there is, definitely. What about human enhancement? Where do we draw the line? It is good that we are doing it for human enhancement, we are doing it for improvement of human body, but what if it possesses what if it creates something which is harmful? How do we prevent misuse or unethical experimentation? So bioethics encourages responsible innovation while ensuring public safety and respect for life.
कम्युनिटी लैब्स क्या होते हैं? सी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बायोहैकिंग मूवमेंट इज द राइज ऑफ कम्युनिटी बायोलॉजी लैब्स। ये जो स्पेसेस हैं ये एक सेफ सुपरवाइज्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती हैं टू कंडक्ट दीज एक्सपेरिमेंट्स, अफोर्डेबल एक्सेस टू लैब इक्विपमेंट, workshops and training, collaborative projects, a supportive community of learners and researchers. So they help ensure that DIY biology remains safe, structured, and educational. Now, what are the breakthroughs enabled by biohacking? So some of the breakthroughs जो biohacking से आए हैं, one is open source insulin projects aimed at reducing cost. They are currently in research, जहाँ पर insulin projects चल रहे हैं कि किस तरीके से insulin treatment की cost को reduce किया जा सकता है. लो कॉस्ट लैब इक्विपमेंट जैसे कि होममेड पीसीआर मशीन्स किस तरीके से बन सकती हैं. सिटीजन लेड जेनेटिक इंजीनियरिंग, genetic sequencing initiatives, how genetic sequencing can be improved, कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंटल टेस्टिंग, किस तरीके से कम्युनिटी बेस्ड डिवाइसेस या कम्युनिटी बेस्ड टेक्निक्स बनाई जा सकती है टू टेस्ट द एनवायरमेंट, novel bioart and science communication projects. So these are some of the contributions show how powerful grassroots science can be. Now, legal and regulatory framework. See, governments worldwide closely monitor genetic engineering and biomedical experimentation. DIY biologist को बायोसेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेगुलेशंस को डेफिनेटली क्लिनिकली मॉनिटर किया जाना चाहिए. एथिकल रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए ऑन जेनेटिक एडिटिंग. देयर शुड बी सम लाइन जिसके आगे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी सम लिमिट डेफिनेटली. एंड परमिट्स फॉर सर्टेन इक्विपमेंट्स और मटेरियल्स. हर चीज को नहीं यूज किया जा सकता इन DIY. ठीक है. सो दीज रेगुलेशंस एम टू बैलेंस इनोवेशन विद सेफ्टी. Now, what are the benefits of biohacking? There are numerous benefits of biohacking. Personal optimization, health improvements. Biohacking offers numerous benefits. Personal optimization and health improvement there is definitely. Scientific literacy बढ़ती है लोगों में. Innovation affordable हो जाता है if it is not restricted up to uh, a certain age group or certain educational group. It encourages open source scientific progress. It also empowers individuals to explore biology. So it gives people the tools to understand and influence their own biology. Now, what are the risks and limitations? There are limitations. प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, हम जनरली उसे कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है, तो लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग. मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क रहता है. बायो कंटेनमेंट चैलेंजेस रहते हैं. एथिकल एंड लीगल ग्रे एरियाज डेफिनेटली हैं. And over reliance on unproven methods can be a harm. So to avoid harm, safety must always comes first. What is the future of biohacking? See, the future of biohacking is incredibly exciting. We may see integration of biological sensors into everyday technology, more advanced DIY genetic tools, personalized medicine based on real-time data. Then there is, there can be human augmentation and enhanced physical abilities. Expansion of citizen science communities. Partnerships can be seen between professionals and DIY scientists, and it has already been, like it is already there. So as long as ethical boundaries are respected, biohacking could transform how we interact with our bodies and the world around us. So thank you so much for watching. If you enjoyed this video, please do like, comment, share and subscribe to my channel. Also, please do let me know which topic you want me to cover next. Thank you. We'll meet in the next video. Till then, bye bye. Take care. Bye bye.